morning students, my name is Bharti, your maths teacher, and today we are going to continue our exercise 8.3. Are you ready for the exercise? Yes, ma'am. Okay, now start doing. Gardening shears both for, gardening shear. You know what is gardening shears? Yes, ma'am. जो गार्डनिंग के जो औजार वगैरह होते हैं ना, gardening shares bought for, this is bought for, buying price means CP. CP is equal to rupees 250. And what is the SP? SP is rupees 325. 325. Very good. Then what is, look at this SP and CP. Which is more? Ma'am, SP profit. Which is more? I'm asking about more. SP, ma'am, selling Yes, price. SP is more than CP, then it is profit here. Yes, Okay. ma'am. What should be there? Profit. How do you find the profit? Then SP minus SP minus CP. CP. Yes, it is 325 minus 250. What is the difference? What is the difference? It is 75. 75. Rupees 75. Now you have to find out the profit percentage. There is a formula for profit percentage. Profit in 200 upon CP. Find out. आपके पास प्रॉफिट, आपके पास 100, आपके पास CP है. जल्दी से परसेंटेज निकालिए. Divya, try to solve. You have profit 75 rupees, 100 upon CP, it is 250. Find out the profit fast. हेलो मैम. Yes, Divya. हेलो मैम. Yes, बोलिए. आवाज आ रही है मेरी? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. बेटे रिजॉइन कीजिए. हेलो मैम. Ma'am, 30%. Very good, Divya. Very Nancy, sorry. It is 30%. 10 will cancel 10. 25 1 25. 25 3 75 3 10 30. It is 30%. What is the profit? Profit is 75 rupees and profit percent is 30%. Okay. Okay. Yes, Now do the ma'am. next question. Is it is also same. Do the next one. Divya, rejoin. Rejoin your class. क्या बोल रहे हैं मैम? A refrigerator bought for rupees 12,000 and sold at 13,500 rupees. Nancy, am I audible properly? Yes, ma'am. My audio is low or high? Normal, ma'am. Normal. Yes, ma'am. Okay. Do your question. It is 12,000 rupees. 12,000. What is the SP? 13,500. 13,500 rupees. It is profit or loss there? Ma'am, profit.
Profit. Yes. What is the profit? SP minus CP. 13,500 minus 12,000. What is 1,500 rupees is the profit? Yes. Am I correct? Now find out the profit percentage. Here it is the formula, profit into 100 upon CP. What is the answer, Nancy? It is 150, 1,1500 into 100 upon 12,000. 2 0 will cancel 2 0, 1 will 0 will cancel 1 0, and 4 3s are 12, and no, it is 2 6 are 12, 2 5s are 10, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 25 upon 2, it is 12, right? 1 by 2%. Is it same, Nancy? Is your answer same, dear? No, ma'am. 12 point, you can also write 12.5%. Okay, correct. Now do the question sorry, part C yourself. अपने आप से समझ में आया बेटे? Yes, ma'am. Okay, do it yourself. Done. Divya, start doing C part C. CP and SP both are given here. Find out the profit or loss, then find the Okay, Miss Ji. percent or loss percent. I don't know, here it is loss or profit. You just do yourself. क्या मैम? पार्ट सी कीजिए और पता करिए इसमें प्रॉफिट है या लॉस है. यस नैन्सी. Ma'am, 20%. 20%, ma'am. 20%. Yes. What 20%? Profit or loss? Ma'am, profit. Yes. What is the CP of the cupboard? It is rupees 2,500. Am I right? Yes, ma'am. Yes. What is the SP? It is 3,000. 3,000. You can see that SP is more than CP. Then here it is profit. What is the profit? Actual profit 500. 3,000 minus 500. Sorry, 2,500. SP minus CP. Okay. It is 500 rupees only. This is the actual profit. Okay. And
And what is the profit percentage? Profit into It percentage is by profit into 100 upon CP. What is the profit? Rupees 500 into 100. What is the CP? It is 20. 500. 20 will cancel. 20. 5 1 ja 5 0 0. 5 5 ja 25. 5 1 ja 5. 5 2 ja 10 and 0. It is 20%. Okay, what is the profit percentage? Profit 20%. percentage is equal to 20%. Now do D parts. D part. Divya, start doing part D. Okay. What is the CP? It is rupees 250. And what is the SP? It is 150. Divya, loss or profit here? SP is lesser than CP. Profit or loss? Divya, unmute yourself and give answer. Ma'am, loss. Yes, loss. Why loss? Because SP is more than. Now you just do CP minus SP. Okay, it is 250 minus 150. What is the actual loss? 100 rupees. It is rupees 100. Then loss percent, same formula applied. It is loss into 100 upon CP. ओके, प्रॉफिट हो या लॉस हो, काउंट सीपी पे ही होगा बेटे, ठीक है. Yes. Okay, now what is the loss? It is 100. What is into 100 and CP is 250. 0 will cancel. 0. 5 and 25 4 ja 100. Then 40% is the loss. Okay, is it done? Nancy, clear dear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिव्या, एक तो आपको कुछ समझ नहीं आता है, एक आप एक जगह बैठते नहीं हो. Sit somewhere. Ma'am, 1 minute. इधर उधर मूव करना है, कभी इधर बैठना है, कभी उधर बैठना है. मैम उधर बहुत शोर हो रहा है. तो पहले पता नहीं होता जब क्लास ज्वाइन करने से पहले? आपका डेली यही काम होता है. बैठ के ठीक से ध्यान दोगे तभी तो कुछ समझ आएगा ना. ओके, डन दिव्या? दिव्या, नैन्सी, क्लियर? Okay, Yes, ma'am. just see, convert each part of the ratio to percentage. We have already completed this type of question. Yes, what is the ratio? 3 Ratio is equal to 3:1. What is the sum of ratio? 4. You have to find out the sum of ratio. 3 plus 1 equals to 4. Okay, it is percentage of first part, percentage of first part is this. 3. परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, नीचे लिखेंगे टोटल, ऊपर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, इनटू में 100. 4 1 जार 4,
425 is 100. It is 75%. Find the second part. Percentage of second part. Yes, ma'am. Nancy, do percentage of second part. Divya, you also do in your notebook. Show me your notebook, Divya. Do you have notebook? Show me your notebook and pen. Divya, where is your notebook? Divya, I'm asking something. No, no. Ma'am, 25%. Wait a minute. Okay, what is the answer? It is 4 upon 1 into 100. 4 1 ja 4, 425 is 100. It is 2500. Very good, Nancy. Is it clear, dear? Yes, ma'am. Okay, okay. Now, then do the next. It is also same. Morning, ma'am. Good morning. You are late, Deep. What was you doing? You are 22 मैम minutes late. मैम सुई ले रहे Yes. मैम सुई ले रहे थे Okay, start doing these questions. Start doing. Yes. Okay. Deep, are you fine now? Yes, ma'am. Okay, okay. Nancy, what is the percentage of first part? 20%. 21? 20, ma'am. Yes, it is 20. And next part? 30. 30. And next part? 50. Very good. You just write the ratio and sum of ratio. What is the sum of ratio, Deep? It is 2 plus 3 plus 5. It is 10. First part. Percentage of first part, it is you just keep the sum of ratio as denominator, and first part it is 2 into 100. 1 and 5s are, and it is 20. Sorry, 20. It is 20%. And second part it is 10 and 3 into 100. 1 0 will cancel 1 0. It is 30%. And third part is 5 upon 10 into 100. 1 0 will cancel 1 0. It is 50%. Very good, Divya. You when you add these percentage, it is all over 100%. 20 and 30, 50, 50 and 50, 100. Okay, do the next. Deep, start doing. Now it is clear. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. find out the sum of ratios, then start doing first part percentage and second part percentage. Keep yourself mute.
Done, ma'am. Done, ma'am. मैम म्यूट है आप। मैम आप म्यूट हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो हो रहा है ना. Sum of ratio. What is sum of ratio? It is 1 plus 4 Five. equals to 5. Five. First part percentage. It is 1 upon 5 into 100. 520 100. It is 20%. Okay. And second part. It is 1 upon 5. Sorry, 4 upon 5 into 100. It is 80%. Correct? You can add 20 and 80. It is 100%. Okay? Yes, ma'am. Now do the third one. आप कर लोगे ना, तीसरा वाला भी आप कर लोगे. Okay? कर लोगे ना दीप? Are you able to do the third question, all the parts of these second questions? Okay, now read the third question. The population of a city decreased. Decreased means कम हो गई from 25,000 to 24,500. Sorry, 25,000 to 22,500. कितनी कम हो गई? 500. Yes, it is 500. जैसे आपने ऊपर लॉस वाला किया था ना, लॉस इन प्रॉफिट, सेम तरीके से होगा. आपको फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज. सेम होगा. इनिशियल पॉपुलेशन क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल होती है जो स्टार्टिंग में थी. 25. इनिशियल पॉपुलेशन it is 25,000 and current population, sorry, decreased population क्या है? 24,500. decreased population, it is 24,500. Okay. What is decrease? Decrease in population, कमी क्या हुई? 500. Decrease in population equals to 25,000 minus 24,500. It is 500. Decrease percentage निकाल दीजिए अब. डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालोगे? सेम फॉर्मूला होगा बेटे. डिक्रीज इन पॉपुलेशन इनटू 100 अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन. ओके. इनिशियल पॉपुलेशन. What is the decrease? It is 500. What is the 100 and initial population is 25,000. 20 will 20, 10 will cancel 10, 25 1 ja 25, 25 2 ja 50. It is 2% decrease in population of the city. Okay, clear? Good. Next. Aman bought a car for rupees which Arun bought a car for rupees 3,50,000. The next year the price went up to 3,70,000. प्राइस हाई हो, प्राइस रेज हुए या फिर लो हुए, डाउन हुए? लो हो गए प्राइस. हाई हो गए मैम. हाई यस, हाई हो गए. इट मीन्स उसको प्रॉफिट होने वाला है. फिर उसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है. सेम क्वेश्चन है. डू योरसेल्फ. स्टार्ट डूइंग. Yes, ma'am.
after class you just send your classwork on the group, okay? Otherwise I will send the link from the drive. Okay, do your classwork properly. Done, Deep? What is the CP of the car? CP of the car 3,50,000. 3 3 lakh lakh 50 thousand rupees. And what is the SP? SP of the 3 car lakh 7 3 lakh 3,70,000. 70,000. Is it profit or loss? Deep. ma'am profit. Yes, here it is profit. Okay, profit SP minus CP. It is 3 lakhs 70,000 minus 3 lakh 50,000. What is the profit? It is 20,000. Am I right? 20,000. Yes, Yes ma'am. ma'am. Yes. What is the profit percentage? What is the formula, Nancy? Profit percentage. Ma'am, CP into 100 by No, profit into no. 100 by profit into 100 by Into 100 upon CP. प्रॉफिट CP. CP इंटू 1 प्लस वो अलग है, जब परसेंटेज में प्रॉफिट दिया होता है वो तब लगाते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है? व्हाट इज द प्रॉफिट? 20,000 into 100. What is the CP? 3 lakh 50,000. 20 will cancel 20. These 20 will cancel these 20. 5 7 ja 35. 5 4 ja 20. It is 40 upon 7. Then 7 5 ja 35. 5 upon 7. It is the actual profit. 5, right? 5 by 7%. Okay? Correct? Very good. Deep, clear? Yes ma'am. Okay. Read the next question. I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at profit of 20%. In this question, the profit is given already, that is 20%. Okay. How much money do I get for it? He just want to know. I just want to know the SP. Okay. Okay, SP. What is the CP? It is rupees 10,000. Okay, what is the profit percentage? It is 20%. Okay, SP. Formula for SP is equal to CP into 1 plus profit upon 100. Okay, what is the CP? It is 10,000. 1 plus what is the profit? It is 20 upon 100. 10,000 into 5. 21 ja 20, 25 ja 100. 1 plus 1 upon 5. 10,000. 5 1 ja 5 and 1 into 6 upon 5. You don't know? Do you know from where this 6 upon 5 came? आपको पता है ना ये कहाँ से आया है? 6/5 ये यहाँ से आया है. 5 1 जा 5. हमने इस वाले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया है. 5 1 जा 5 प्लस. ओके, नाउ कट. 5 2 जा 10. 0 0. It is 12,000. What is the SP? Rupees 12,000. Is it clear?
समझ में आया एसपी निकालने का फॉर्मूला? जब हमें Yes, प्रॉफिट ma'am. परसेंटेज में गिवन होता है तो हम एसपी ऐसे निकालते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन। जूही ने सेल किया है, इसका मतलब हमें एसपी पता है, ठीक है? 10,500 रुपीज। सी लॉसेस, उसको लॉस हुआ है बेटे। क्या हुआ है उसको? Loss. लॉस हुआ है। लॉसेस 20% इन द बार्गेन। What was the price at which she bought it? डू इट। सेम होगा, आपको एसपी गिवन है तो आप एसपी की जगह लिख लेना, एसपी के नीचे एसपी, सेम फॉर्मूला लगेगा, जो आपके पास है लिखते चले जाओ। इट विल बी सेम फॉर्मूला बेटा, एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू, बिकॉज लॉस हुआ है तो माइनस लगाएंगे बस, ठीक है? लॉस अपॉन 100, जब लॉस होगा तो माइनस लगाएंगे, अदरवाइज प्लस लगाएंगे। एस पी गिवन है, एस पी के नीचे एस पी लिख दो, जो कुछ गिवन है लिखते चले जाओ, ठीक है? फॉर्मूला के नीचे अभी आपको एस पी गिवन है ना, यहाँ पे लिख दो एस पी की जगह पे। Sorry, 13 SP is given, it is 13,500 rupees. CP we don't know CP, it is, the question is asking about the buying price, okay? CP we don't know, 1 minus what is the loss percentage, it is 20 upon 100, 13,500, CP is equal to 20 1 जा 20, 5 1 जा 5, माइनस 1, इट इज़ 4 अपॉन 5। समझ में आया है 4 अपॉन 5 कैसे आया है? Yes, ma'am. 1 माइनस 1 अपॉन 5, 5 1 जा 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और माइनस किया 1, तो ठीक है। नाउ सी पी इज इक्वल टू 13,500, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। सी पी इज इक्वल टू, और डिवाइड कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन में? डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना। नाउ कंप्लीट इट। जा 4, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 and 2 3 जा 6, 2 7 जा 14. Now multiply these two number, 3375 into 5. It is 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35 and 2 37. Now 3 5 3 जा 15 and 3 18, 1 5 3 जा 15 and 1 16,800, 75,000 is, sorry 75 is equal to CP. क्या है CP? समझ में आया क्वेश्चन? Yes, ma'am.
Yes. Nancy, what is the doubt? Your face expressions are telling that you have any doubt. What is the doubt, dear? मैम यहाँ समझ नहीं आया ये जो लास्ट में फॉर्मूला है. समझ में नहीं, ये जो कैंसिल किया मैंने ये वाला, नो मैम फॉर्मूला. हाँ मल्टीप्लाई समझ में नहीं आया. फॉर्मूला मैम. फॉर्मूला सेम है डियर, फॉर्मूला एक ही होता है, एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 1. अगर प्रॉफिट है तो प्लस लगा दो, अगर लॉस है तो माइनस लगा दो. ओके, एंड प्रॉफिट और लॉस जो भी आपको गिवन है अपॉन 100. दिस इज द सेम फॉर्मूला, क्योंकि अभी इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, लॉस हुआ था ना हमें. Yes. Then we applied minus, and what was the loss? It is 20. 20 banja 20, 25 is 100, and SP is given 13 5 is. Okay, CP not given, तो हमने CP को CP लिख लिया. ठीक है, एंड अब हमारे पास फ्रैक्शन है बेटा, ये सॉरी इट इज ऑफ 1/5. 5 बन जा 5 माइनस 1, इट इज 4/5. अब समझ आया? Yes. ओके, अब देखो ये 4/5 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना. CP is equal to 13,500 divided by 4/5. CP is equal to 13,500. डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं एंड फ्रैक्शन विल बी रेसिप्रोकल. ओके, अब समझ आया? आगे करूँ अब कैंसिल? आगे हो रखा है. ओके, गुड. Now next question, that is also same as ratios. रेशियो ही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस लिख के दिया हुआ है. Chalk contains calcium, carbon, oxygen. What is this? Calcium, carbon and oxygen. What is the ratio? 10:3:12. Okay, what is the sum? Sum is 25, I think. 13. Okay, sum is 25. The question is asking find the percentage of carbon. कार्बन की परसेंटेज पूछे, यानी कि सेकंड पार्ट की. कार्बन परसेंटेज. ओके, 25. What is the carbon's ratio? It is 3 into 100. 25 बन जाए 25, 25. It is 12%. कितना परसेंट कार्बन है बेटा? 25. 12. 12%. In next question, in a stick of chalk, carbon is 3 grams. कार्बन कितने ग्राम्स है? 3 grams है. What is the weight of the chalk stick? कार्बन 3 ग्राम है, तो चॉक स्टिक का वेट कितना होगा? Try to do this. Not clear?
What is the quantity of carbon in the stick? Quantity 3 of gram. carbon in the stick. 3. It is quantity of carbon. What is the quantity? It is 3 grams. Okay, and let's weight of the chalk. Let the weight of the chalk. हमें weight नहीं पता ना, No, ma'am. तो क्या कर लेंगे, हम उसको assume कर लेंगे, that is x ग्राम. ओके, क्लियर? Yes. हमें ये पता है ना 3 ग्राम की वैल्यू क्या आई अभी हमारे पास, 12% आई है ना कार्बन की. देन Yes. 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3 ग्राम. पता है ना हमें, जो ये 12% है वो किसका है, होल क्वांटिटी, दैट इज x. ओके, एंड किसके इक्वल है ये 12%, 3 ग्राम, दैट इज कार्बन. ओके, देन 12% of x is equal to 3 gram. Then x is equal to 3 gram divided by 12 upon 100. X is equal to 3 into 100 upon 12. 3 1 ja 3, 3 4 ja 12, that is 25 grams. Okay, clear? Yes. आप सिंपली भी चेक कर सकते हो. देखो रेशियो क्या था, 10:3:12, यही था. ये कार्बन है, ये कैल्शियम है, और ये आपका ऑक्सीजन है. ठीक है, यहाँ पे देखो 3 ग्राम दिया है, 3 को 3 ग्राम दिया है, यानी कि 1 जा हुआ है 3 1 जा 3. और जो सारे रेशियो होते हैं सेम पैटर्न में चलते हैं. ओके, तो ये भी 12 1 जा 12 हो जाएगा, इंटू 1 इंटू 10 and 3 and 12, it is again 25. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Very good. Okay, next question, so we will do in our next class. Your class time is over, and complete your notebook up to question number 7. Okay, and complete your notebook and send your classwork. I'm sending the link. Okay, bye students, bye. Bye, Bye, ma'am. ma'am.